हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकीम अहमद और मैं आपको अपने नए यूट्यूब चैनल डॉक्टर अहमद मैथ्स क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है मैट्रिसेस। ये टॉपिक मैं क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बना रहा हूँ। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये बोर्ड पे मेंशन है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रोज एंड कॉलम्स रेस्पेक्टिवली। सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो अगर हम उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन कर दें तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर वर्ड एंड मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। सो व्हाट वी हैव, a matrix is represented by the capital letter of English alphabet. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these numbers I have enclosed within square brackets. Here we have two types of arrangements. These kind of arrangements, these are called horizontal arrangements, and these horizontal arrangements are called rows of the matrices. Horizontal arrangement which are called rows, and vertical arrangements called columns. So what we have a matrix in which there are two rows. First row is 1 2 3 and the second row is 4 5 6. So this is row 1 and this is row 2. Now we have three columns. 1 4 is the first column, 2 5 is the second column, 3 6 is the third column. This one is C1 which represents column 1. This one is 2 5, C2 which is column 2, and this one is 3 6 which is column 3. Now what is the order of a matrix? Order of a matrix. What is the order of a matrix? If we multiply the number of rows with the number of columns, then we get the order of the matrix. Here the order of the matrix is 2 by 3. We will write it as 2 into 3, but it is read as 2 by 3. So the order of the above matrix will be read as 2 by 3. So I am recalling the topic. A matrix is a rectangular arrangement of numbers written in the form of horizontal and vertical lines called rows and columns respectively. Matrix basically क्या है? हमारे पास कुछ numbers दे रखे हैं, उसको अगर हम horizontal arrangement और vertical arrangements में लिखते हैं enclosed in square brackets, then the arrangement that we got is called a matrix. The horizontal arrangements are called rows and the vertical arrangements are called columns. By the term order we means the number of rows into the number of columns. We will not multiply, the order will not be 6. We will not write the order of this matrix as 6. We will just write the order of the matrix is 2 by 3. तो इस matrix का क्या order होगा? 2 by 3 होगा। हम इसे इसके order को 6 नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 into 3 लिखा हुआ है, तो आप इसे 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं? बेसिकली हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और जो सेकेंड एलिमेंट है 3 वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो 2 into 3 it will be read as 2 by 3, and the numbers that are enclosed in the square brackets are called entities or elements of the matrix. So this is the basic definition of matrix. Now I am giving the general form of a matrix, how we generalize a given matrix. General form of a matrix. So as I explained earlier that a matrix is represented by capital letter of English alphabet. So here we assume a matrix to be A. So the general form of a matrix will be A11, A12, A13 up to A1n. Here the first one represents the row and the second one represents the column. So the element A11
will exist in first row and first column. In the second element A12, first one represent the number of rows and the second number represents the number of columns. So A12 lie in first row and second column. So we will writing the second row as A21, A22, A23 up to A2n. Here first two represent the number of row in which this element exists and one represent the number of column in which this element exists. A22 represents second row and second column. Similarly, A31, A32, A33 up to A3n. Here n represents the number of column. So AM1 will represent mth rows and first column. AM2 represent mth row and second column. AM3 represent mth row and third column. And the last one is AMN, which will represent the element existing in mth row and nth column. So the order of this matrix will be m by n. So the general form of a matrix is A is equal to Aij m by n, where I represent row, J represent column, and m by n is the order of the matrix, is the order of the matrix. So what we do, A is equal to square bracket Aij. I represent the number of row, J represent the number of column, and m by n is the order of the matrix. So this is the general form of a matrix. Now what I am explaining in the next part. In the next part I will explain the different operations that are applicable on matrices with addition, subtraction and multiplication of matrices. So operation on matrices. Operation on matrices includes addition, subtraction and multiplication of matrices. So any two matrices or any two or more than two matrices can be add or subtract if and there is the same order of the given matrix. अगर हमारी matrices का same order है तभी हम उसमें addition और subtraction कर सकते हैं, बट multiplication के केस में ऐसा नहीं होता है. ओके, अगर हमारी matrices का order same है तभी हम उसमें addition और subtraction कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसमें addition और subtraction नहीं कर सकते. बट multiplication में ऐसा नहीं होता है कि आपका दोनों ही matrix का order same हो. So addition of matrices. Suppose we have two matrices. Suppose we have matrices A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Students, what is the order of this matrix? Here we see the number of rows are 2 and the number of columns are 3. So the order of the matrix is 2 by 3. So for adding any other matrix to this matrix A, the matrix will be required to be of order 2 by 3. So we have taken another matrix B, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of the same order 2 by 3. We have two matrices now of the same order 2 by 3, namely A and B. So what is A plus B? What is A plus B? A plus B will be the matrix in which we will add the corresponding entities or the corresponding element. 1 will add to 3, 2 will add to 4, 3 will add to 5, 4 will add to 6, 5 will add to 7 and 6 will add to 8. So 1 plus 3, 2 plus 4, 3 plus 5, 4 plus 6, 5 plus 7 and 6 plus 8. So we will get the resultant matrix to be
1 plus 3 is 4, 2 plus 4 is 6, 3 plus 5 is 8, 4 plus 6 is 10, 5 plus 7 is 12, and 6 plus 8 is 14. It is 10. Okay, so this is the addition of matrix. Here I have explained how we will add two matrices if they are of the same order. We will only add or subtract if the order of the matrices is same. Otherwise, we will not operate addition. Okay. Second one is subtraction of matrices. Suppose we have matrices. Suppose we have matrices A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. This matrix is of order 2 by 3. The order of this matrix is 2 by 3. We will take B of the same order. 1, 0, 3, minus 1, 2, 4. Now the order of the matrix B is also 2 by 3. We have to deduce A minus B. So A minus B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 1, 0, 3 minus 1, 2, 4. So A minus B will be equal to 1 minus 1, 2 minus 0, 3 minus 3, 4, this minus and this minus will be plus, 4 plus 1, 5 minus 2 and 6 minus 4. So we will have the resultant matrix to be 0, 2, 0, 5, 3, 2. So in this way we will perform subtraction. Okay. So now we will proceed to our third operation, multiplication of matrices. So students, अभी हमने सीखा कि मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो या ना हो तब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सिर्फ इसके लिए एक कंडीशन का होना ज़रूरी होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ कॉलम जिस दूसरी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. सो इफ वी हैव ए मैट्रिक्स, सपोज वी हैव मैट्रिसेस, सपोज वी हैव मैट्रिसेस A is equal to 1, 2, 3, 4. The order of this matrix is, here the number of rows are 2 and the number of columns is also 2. So its order is 2 by 2. Now we have another matrix B. It is 1, 2. Here the number of rows are 1, 2, but the number of column is 1. So its order is 2 by 1. Now what I have explained, that the number of columns of matrix A, which means 2, will be equal to the number of rows of matrix B, which is 2. And the resultant matrix AB, जो कि हम इसके मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन करेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 1. Okay. So how could we perform this multiplication? AB. 1, 2, 3, 4. And the next matrix is 1, 2. What will we do? We just multiply rows to the column. First we multiply row 1 to this column, then we multiply row 2 to this column. So 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4. Now 3 into 1 is 3 plus 4 into 2 is 8. So we will got the matrix 1 plus 4 5 and 3 plus 8 11. Its order is, here the number of rows are 1, 2 and the number of column is only 1. So the order is 2 by 1.
what I have told you earlier. So in this way we will multiply two matrices. Now I have taken another example in which the order of the two matrices are same. Okay, suppose we have matrices. We have a matrix A, 1, 2, 3, 4. The order of this matrix is 2 by 2. And we have another matrix B, 1 minus 1 and 0, 2. The order of this matrix is also 2 by 2. So what will be AB, A into B? 1, 2, 3, 4 into 1 minus 1, 0, 2. What we do is, we multiply row of first matrix to the column of second matrix. So 1 into 1, 1 in between plus sign, 2 into 0 is 0. 1 into minus 1 is minus 1, in between plus sign, 2 into 2 is 4. Now 3 into 1 is 3, in between plus sign, 4 into 0 is 0. Now 3 into minus 1 is minus 3, in between plus sign, 4 into 2 is 8. So the resultant matrix is equal to 1, 4 minus 1 is 3, 3 and 5. The order of this matrix is 2 by 2. इस A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम विच इज इक्वल टू 2, B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2. ये दोनों सेम होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में. फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स A B आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रो ऑफ A इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B. सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या सीखा? मैंने आपको मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन और जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये बताया. तो मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है और हम उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अगर हम उनको लिखते हैं इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो वो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स. और ऑर्डर से हम क्या समझते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लिकेशन साइन number of columns. Like the number of rows of this matrix is 2 and the number of columns of this matrix is also 2. So the order is 2 into 2. We will write it as 2 into 2 but we'll read it as 2 by 2. इसको हम 2 into 2 तो लिखेंगे पर इसको पढ़ेंगे क्या? 2 by 2. और ये 2 into 2 इसका ऑर्डर तो मतलब ये नहीं है कि इसका ऑर्डर 4 है 2 into 2. इसका ऑर्डर हम ऐसे ही लिखेंगे. तो मैट्रिक्स बताया मैंने और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताया. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर आपकी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या अगर दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पर मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होता है. मल्टीप्लिकेशन के केस में फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये इक्वल होना चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैट्रिसेस के बारे में ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.